Hello student, today I will explain you the fundamental principles of corporate governance. The first one is transparency. Transparency means accurate, adequate and timely disclosure of relevant information to the stakeholders. Without transparency, it is impossible to make any progress towards good governance. Business heads should realize that transparency also creates shareholder value, but many times information sharing is under the excuse of confidently. There is a need to move towards international standards in terms of disclosure of information by the corporate sector, and through all this to develop a high level of public confidence in business. When a company has public shareholding, it is imperative that its commitment to financial transparency must be total. The company is the trustee of the investors' money, and this responsibility in turn demands full disclosure. A corporation in India must learn to work with transparency. This is the essential to maximize their wealth and the wealth of the nation. Transparency and disclosure are the key pillar of corporate governance because they provide all the stakeholders with the information necessary to judge whether their interests are being taken care of. Then accountability, it is the important point. Corporate governance has to be a top-down approach. Chairman, board of directors, and chief executives must fulfill their responsibilities to make corporate governance a reality in Indian industry. In companies with good governance, accountability is not just bottom but also follows the reverse order. A departmental is, for example, responsible for every decision taken on behalf of his department. Accountability also favors the objective of creating shareholder value. Then, merit based management means a strong board of directors is necessary to lead and support merit based management. The board has to be an independent, strong, and strong, where the sole motive should be decision making through business. Though corporate governance is much broader than corporate management, an efficient and effective administration of corporate sector is essential for meeting the desired objectives. Corporate governance ensure that long-term strategic objectives and plans are established and that the proper management structure is in place to achieve those objectives, while at the same time assuring that the structure function to maintain the company's integrity, reputation, and responsibility to its various stakeholders. Thus, corporate governance involves the broad parameters of reporting system, accountability, and control. Okay. Next point is the need for corporate governance. To sustain and develop industries on healthy line, there is an imperative need of good corporate governance. The and of corporate governance lies in business scheme and failure, loss of confidence in the report and accounts of companies, and he audit statements
attached to them business scam and collapse of business giants. All these things together bring in forefront the need for good corporate governance. Why corporate governance has become more important for economic development and more important policy issue in many countries are discussed below. First point is privatization, then effective functioning due to liberalization and reshaping of local and global financial landscape. Privatization means the private market based investment process by good corporate governance is now much more important for most economic than it used to be. Privatization has raised corporate governance issue in sectors that were previously in the hands of the state. Firms have gone to public market to seek capital and mutual societies and partnership have converted themselves into listed corporations. Then effective functioning due to liberalization means due to technological progress, liberalization and opening up of the financial market, trade liberalization and other structure reform, price and the removal of restrictions on product and ownership, the allocation within and across countries of capital among competent and competition purpose has become more complex as has monitoring of the use of capital. This makes good governance more important but also more difficult. जितना हम गुड गवर्नेंस फॉलो करने जाते हैं उतनी ही तकलीफ भी हमें होती है, मतलब बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस. Then reshaping of local and global financial landscape. This is the important thing. Programs of delegation and reform have reshaped the local and global financial landscape. Long-standing institutional corporate governance arrangements are being replaced with new institutional arrangements, but in the meantime, inconsistency and gaps have emerged. And then for next point or next and last point is increase in international financial integration. International financial integration has increased and trade and investment follow are increasing. This has led to many cross-border issue in corporate governance. Cross-border investment has been increasing, for example, resulting in meetings of corporate governance culture that are at time uneasy. Okay. The next point is डिज़ास्टर मैनेजमेंट. अब व्हाट इज़ द कॉरपोरेट गवर्नेंस हमने देखा, उसके बाद वो सिटीजनशिप वगैरह उसके ऊपर इतने क्वेश्चंस नहीं हैं, बट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. व्हाट इज़ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट? डिज़ास्टर मैनेजमेंट मीन्स a disaster is the perceptions of an unpredictable event that threatens important expected of stakeholders and can seriously impact an organization performance and generate negative outcomes. डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्यों होता है? देखो,
टेंथ और ट्वेल्थ के एग्ज़ाम का भी क्या किया, डिज़ास्टर कमेटी के ऊपर छोड़ दिया, है ना, कि डिज़ास्टर कमेटी डिसाइड करेगी एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं, क्योंकि जो भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो पता नहीं होता है हमें कि ये होने वाला है, तो उसके लिए हम प्री प्लान नहीं कर सकते ना। अब हमें पता था क्या कि कोरोना होने वाला है, तो हमें प्री प्लान करके रखना है, नहीं। लेकिन जब कोरोना की सिचुएशन आ गई, कोविड सिचुएशन आ गई, तो उसे टैकल करने के लिए हमने बहुत सारे प्लान किए। उसके लिए हमने बहुत सारे लॉकडाउन किया था। उसके बाद जो मेडिसिन है या मेडिकल ट्रीटमेंट थी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने। ओके, अब हमारे लिए वैक्सीनेशन भी आ गया है। तो वैक्सीनेशन कब बनाया कि जब कोरोना या कोविड की सिचुएशन हो गई और हमें पता चला कि इसके ऊपर हम मेडिसिन बना सकते थे। लेकिन इससे पहले हमें पता था कि कोरोना क्या है और उसके लिए हमें कुछ बनाना नहीं है। या फिर कभी भूकंप आता है या अर्थक्वेक होता है, या फिर कभी अब बारिश आ रही है, बारिश के वजह से पानी ये होता है, बाढ़ आ जाती है, तो हमें पता नहीं होता है ना ये होने वाला है या नहीं। हाँ, बारिश आने वाली है पता रहता है कि बारिश का मौसम है तो बारिश बहुत होगी, तो उस हिसाब से हम मैनेजमेंट कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, या फिर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सोच के रखता है, या उससे ही पहले रास्ते का काम हो जाता है। बट सडनली जो बाढ़ आ जाती है या फिर कोई स्फोट हो जाता है, तो वो हमें पता नहीं होता है। ओके, इसके लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ डिज़ास्टर कंसिस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ threats to an organization and its stakeholders, and the methods used by the organization to deal with this. Due to the unpredictable of global event, organization must be able to cope up with the potential of drastic changes way to the way they conduct business. Okay, अब यहाँ पे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट देखेंगे, वो कॉरपोरेट सेक्टर से रिलेटेड होगा, बट डिज़ास्टर मैनेजमेंट हर जगह होता है, हम हमारे लाइफ का वो एक पार्ट होता है। ओके, डिज़ास्टर मीन्स एनी इमरजेंसी सिचुएशन। ओके, तो इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो किसी के भी लाइफ में कभी भी आ सकती है। हर एक इमरजेंसी सिचुएशन का टाइम अलग होता है, या उसका जो इफेक्ट होता है वो अलग होता है। ओके, जब कहाँ पे स्पोर्ट होता है, मतलब वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, आग लगती है, उस टाइम हम कैसे टैकल करें ये हमें पता होना चाहिए। ओके, which disturbs the employees as well as leads to instability in the organization। जैसे अभी कोविड के वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब गई है, बहुत सारे स्टेबल नहीं है लोग, बहुत सारे लोगों की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि मतलब ये पता नहीं था उन लोगों को कि उनकी जॉब जाने वाली है। ओके, तो सडनली अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है या उसके वजह से जब डिस्टर्ब होता है तो बहुत बुरा होता है। डिज़ास्टर अफेक्ट एन इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी ऑन द होल। द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एक्सपेक्टेड एंड sudden changes in organization culture is called as disaster management. Disaster management is the process by which an organization deals with a major event that to harm the organization, its stakeholders, or the general public. Disaster management involves dealing with threats before, during, and after they have occurred. It is a discipline within the broader context of management, consisting of skill and techniques required to identify, assessing, understand the cope up with serious situation, especially from
the moment it first occurs to the point that recovery procedure start. Okay. डिज़ास्टर टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर में नेचुरल डिज़ास्टर होता है, टेक्नोलॉजिकल होता है, देन ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकता है, उसके बाद मिसकंडक्ट की वजह से भी हो सकता है. ओके, श्योर.